हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को वेलकम मेरे चैनल में वापस। आई रिसेंटली परचेज द गैलेक्सी वॉच 7 इन दी सेल ऑफ द फ्लिपकार्ट एंड जो मेरे को कॉस्ट करी अराउंड 14K के आसपास विद बैंक ऑफर्स एंड ऑल। तो ये बहुत अच्छी डील इस टाइम पे चल रही है। तो आई एडवाइस एवरीवन, अगर उनको डिजिटल वॉच चाहिए तो वो परचेज़ कर सकते हैं। सी दिस इज़ द डायल दैट आई लव एंड मैं इसको पिछले 10 दिन से यूज़ कर रहा हूँ एंड मैंने इसको अभी सेल में ही ख़रीदा था। तो 14K इज़ द बेस्ट बाय अमाउंट जो इस घड़ी के लिए हो सकता है। और ये मैं इसको अभी डेली ड्राइवर एज अ डेली ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ। इट्स स्नैपियर, इट्स एवरीथिंग दैट आई कैन यूज़ इट फॉर। अब अगर नीचे से आप स्क्रॉल करते हो तो ये ऐसे दिखता है इसका सारे ऐप्स। अगर आप ऊपर से स्क्रॉल करते हो तो इट गोज़ अबाउट द पर्सन, द टाइम एंड एवरीथिंग, and you can scroll towards the right side as well. Bluetooth connectivity, payments, everything is here. And this is, if you are here, you can go back clicking this. So this is how the watch looks. It's durable. 10 दिन मैंने अच्छे से यूज़ किया, it's much durable. एंड आई एडवाइस, अगर किसी को 14K के आसपास का बजट है, 15K का भी है, दिस इज़ द बेस्ट बाय। इसका प्रोडक्शन एंड इट वॉज लॉन्च इन लास्ट जुलाई, दैट इज़ जुलाई 2024। और ये मैंने अभी सितंबर एंड में ख़रीदी है फ्लिपकार्ट सेल में, और ये अभी भी सिस्टम में लाइव है फ्लिपकार्ट पे। यू कैन परचेस इट विद ऑफर्स एंड ऑल। 15K के आसपास इट्स अ गुड डील। इसके स्पेक्स अगर मैं बात करूँ तो वॉच के अंदर आपको एक इसका चार्जर मिलता है बेसिकली, एंड चार्जर के आसपास आपको वो चीज़ें मिलेंगी, इसके साथ गाइड्स एंड ऑल। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वन। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पेक्स। इसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन आता है, इट्स OS वर्जन 6। दिस इज़ द वर्जन, दिस प्ले सिस्टम वर्जन इज़ 14 एंड द वेयर OS वर्जन इज़ 5। इस वॉच की अगर मैं स्पेक्स की बात करूँ तो इट इज़ 1.5 इंच सुपर एमोलेड स्क्रीन विद 480x480 सुपर रेजोल्यूशन। इट्स अ गैलेक्सी वॉच एंड द LTE वर्जन वॉच 7, so 44 and the RAM is 2 GB. It's 32 GB storage variant. Weight is around 3.8. It's like silver color, and the battery is 425 mAh. Yep. And it comes with all the sensors, bioactive sensors, optical biosignal sensors, electrical heart rate signal, bioelectrical impedance, temperature sensor, accelerometer, barometer, every kind of. And it's a LTE version, so you can connect your SIM. मैंने अपनी जियो की सिम इसमें कनेक्ट करी हुई है, so if you'll see, we can get it why it's eSIM supported. So SIM is here. LTE version, NPC, you can do the payment from the NFC, and the Exynos processor is W1000, which is same in Galaxy Watch 8 as well. So yeah, I think it's a steal, and I'll advise you can buy it for yourself. Thank you everyone.